people don't see, people just see those 30 seconds video, but the hard work behind it 30 seconds video 2 to 3 hours, as you told कि you spend your whole day for that video. मतलब वो पता नहीं चलता, आपको सिर्फ आउटपुट देखने को मिला 30 सेकंड की रील, यू जस्ट समटाइम्स यू डोंट इवन लाइक इट बट यू डोंट नो कि उसके पीछे कितना हार्ड वर्क लगा है। तो मैं कम से कम, मैं जब स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी थी तो मुझे 50-50 60-60 रीटेक लगते थे। मतलब मैं गा रही हूँ, कभी कोई नोट हिट नहीं हो रहा, या फिर कभी ज़्यादातर मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होती थी अपनी वीडियो से, तो मैं बनाती रहती थी। आई केप्ट ऑन मेकिंग कि कोई तो अच्छी लगेगी। जब तक मुझे खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, आई वोंट पुट इट आउट देयर। तो उसके पीछे मैंने एक वीडियो डाली भी थी अपने इंस्टा पे, जिसमें आई वॉज ट्राइंग टू शूट अ वीडियो बट नो वन वॉज लेटिंग मी डू इट। कभी मेरे स्पीकर की बैटरी लो हो जाती थी, कभी मेरी मम्मी पीछे से आवाज़ लगा देती थी, कभी मेरा फ़ोन गिर जाता था। तो आई पुट इट देयर कि all these struggles you have to go through to make a nice video. Hey guys, welcome to the new podcast. So in today's podcast we have Runjhun with us. Hi Runjhun, welcome to the podcast. Hi, thank you so much for having me. Yeah, so people who must be wondering this podcast is like all about. So in today's podcast we'll talk about artist who is not we can say not followed the training process of learning a singing from the very beginning. She is kind of a self-made or independent artist who have like made his own journeys, own ways. So for that we have Runjhun with us. So Runjhun will tell all all kind of hurdles and all kind of learnings from like very. I think you have started your singing journey at what age? When I was in 6th standard. Okay, 6th standard. So people just stay connected because we'll have a hell of questions for her. So my very first question to you, Runjhun, is if you want to explain music, like what music stands for you or what music brings to your life or to you as in like in your daily, like when you do music, what is the one feeling which comes to you? Okay, so music is something that keeps me going, like in my everyday life, in my daily ventures. This is something that keeps me connected, that keeps me positive, energetic. So, you're all tired and when your mood's not right, you just come back and you just plug in your headphones and music is there to, cheer you up always. So music is something that I've been following when I was very young because my dad was into it. So that is something that is staying with me, that has been with me and will stay with me for a very, very long time, like till I die. Yeah, so maybe in a day if you are feeling a bit low, I think that's one thing you would probably, yeah. Exactly. Music can lift up your mood anywhere, anytime, I believe. Yeah. Okay, so basically, if you want to explain singing for a singer, like how a singer see being a singer, like what kind of feeling you have when you kind of sing or when you do vocals to a particular song. So what kind of feeling you have in yourself? Ki yaar, I do singing just for singing a song out there, or just for yourself, or just for the audience who are singing you. Like you are doing singing for yourself first, or for like what priorities basically when you do singing? I think I don't have any priorities when I sing. I just sing from my heart, and I think I sing for everyone. I sing for myself. I sing for the people who love listening to me. I sing for my parents, for my friends who encourage me to sing and do well in this particular field. So it's a feeling and I feel connected to it. So when I sing, there isn't something particular in my mind कि मैं सिर्फ इसके लिए गाऊंगी या मैं अपने लिए गाऊंगी. अगर मैं गा रही हूँ तो मैं उस फील के साथ गाऊंगी, और अगर गाते टाइम वो फील, if you're singing a sad song, then you should feel that emotion. If you're singing a happy song, then you should feel cheerful, you should feel joyful. So that is that feeling. So you should just keep that feeling in your head while you sing, and you should not even consider the people who are around you कि मैं अपने लिए गाऊँ या मैं किसी और के लिए गाऊँ. Sing for everyone. Sing to make everyone and yourself happy.
Yeah. Okay, so now I'm taking you back in your journey, like from where you started from zero. So I want to like know the people who are watching this podcast, the budding artists, like how you have started when you was in your seventh standard, how you like think, yeah, maybe I can be a singer. Then, though you have not learned, you haven't not like went through a training process of singing, but how you have taken those baby steps while you are in kind of finding out here, yeah, I can be an independent artist also, I have a great vocal. So how you trained yourself, like self trained yourself, can you tell a bit from the very beginning? Okay, so actually, I never realized that I had this thing in me that I could sing. तो वन डे ऐसे ही हम लोग सब घर पे बैठे हुए थे एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग लाइक आई यूज टू हम पूरा दिन मैं घर में घूमती रहती थी गाती रहती थी बट कभी किसी को बैठकर सुनाया नहीं था कि मैं गा लेती हूँ मतलब मुझे अकेले में खुद को लगता था कि यार मैं आई एम हिटिंग द राइट नोट्स बट नो वन देयर टू रिकग्नाइज व्हाट आई वाज सिंगिंग तो एक दिन ऐसे ही सब घर पे बैठे हुए थे एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग एंड माई डैड वॉज लाइक कि ओके दैट वॉज गुड कैन यू सिंग दैट अगैन तो मैंने गाया एंड ही वॉज लाइक उसके नेक्स्ट डे मेरे स्कूल में कॉम्पिटिशन था इट वॉज लाइक अ टैलेंट हंट तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम इसमें पार्टिसिपेट कर लो एंड जस्ट सिंग अ सॉन्ग आई विल प्रिपेयर अ मेडले फॉर यू एंड जस्ट गो अहेड एंड सिंग इट एंड आई वाज लाइक कि मैंने कभी गाया नहीं है एंड टैलेंट हंट में मैं ड्राइंग कर लूँगी मैं डांस कर लूँगी बट सिंगिंग मैं आज पहली बार गा रही हूँ बट ही वॉज लाइक जस्ट गो फॉर इट तो मैंने उस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया एंड ही प्रिपेयर्ड अ मेडले फॉर मी तो मैंने वो जाके वहाँ पर गाया एंड आई वन द फर्स्ट प्राइज तो घर पे आके आई वाज लाइक कि या आई एक्चुअली कैन सिंग तो उसके बाद मैंने और गाना शुरू करा मैं गाती रही आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस जस्ट फॉर माई सेल्फ आई नेवर पुट देम एनीवेयर उसके बाद it just kept going and then I started to realize that I should really start to learn singing तो मैंने एक दो जगह पर क्लासेस ट्राई करी बट उस टाइम पर ऐसा लगता था कि ये क्या है ये राग और ये तो मुझसे नहीं होगा तो मैंने छोड़ भी दिया स्टार्टिंग में लाइक मुझसे हो नहीं पाएगा ये एंड आई वाज लाइक कि अगर मैं सही नोट सेट कर रही हूँ तो मैं ऐसे ही गा लेती हूँ मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है बट एक्चुअली आई एम नॉट गिविंग अ रॉन्ग मैसेज हियर पीपल हु आर इनटू सिंगिंग शुड नो the basic requirements for singing तो वो it is a necessity बट वो तो मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने छोड़ दिया और मैंने कभी सीखा भी नहीं अच्छे से बट आई डोंट थिंक इट्स एवर टू लेट टू लर्न तो अगर अब भी मुझे मौका मिलता है तो आई विल लर्न सिंगिंग इट्स जस्ट कि विद ऑल द एग्जाम्स एंड द कॉलेज एंड द पढ़ाई एंड स्टफ आई वॉज नेवर एबल टू डिवोट a particular time to लर्न तो मैं बस ऐसे ही गाती रही एंड मैंने सिंगिंग तो सीखी ही नहीं उसके बाद मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी और मैंने सोचा कि एक इंस्टा हैंडल बनाते हैं एंड उस पर डालते हैं लाइक मैंने कभी सिंगिंग की वीडियो डाली नहीं थी तो मैंने डाली एंड द इमेंस रिस्पॉन्स दैट आई गॉट ऑन दैट वीडियो वॉज ओवरवेलमिंग उसके बाद मैं ऐसे हो गई मैं आसमान में पहुंच गई मैंने कहा अब तो यही करना है अब तो मैं और डालूंगी बिकॉज यू नो दैट एप्रिसिएशन दैट यू गेट इट जस्ट इट बूस्ट्स यू तो मैंने कहा कि अगर सबको अच्छा लग रहा है तो फिर इसका मतलब मैं अच्छा गा लेती हूँ तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी तो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस वो भी ट्रैक मेरा बीच में छूट गया था बट आई केप्ट मेकिंग वीडियोस एंड टिल डेट आई post videos and the love and support that my friends and my acquaintances give me is what is Don't you think that this singing is like basically you have inherited from your father? Matlab, like this is very this is very, I can say, like even I have seen people who have not gone through any training process, but you should have something, some knowledge of basic notes and all those things. Like as you told कि यार मेरे को थोड़ी knowledge थी कि notes ऐसे लगते हैं और ये and blah blah things. So basically this is कि आपको थोड़ी knowledge होनी चाहिए. You should have a bit knowledge about music, which not and so things, and you have added this thing yaar, you should learn, you should go through a training process of singing. That is very needful. But in your case, this is breaking the myth also at the same time कि यार ऐसा नहीं है, if you're not trained singer you can also do wonders. It's just कि if you have that confidence, you just put your video out there, no matter how many people are watching it. Maybe like you got that much response, people should also get the response if they are posting a video.
So from this we can take this कि यार people who are watching this podcast, they must be wondering कि यार we should have a studio, or we should launch a video, then only we'll get that much response. It's not that. You can start from a tiny thing also. Yeah, you can start from anywhere, and it's not that कि if you love to sing तो फिर singing सीखना important है ही. अगर आपको नहीं भी सीखना, बिकॉज अभी मैं बहुत ज़्यादा इस कोविड में स्पेशली बहुत ज़्यादा विटनेस कर रही हूँ ये चीज़ कि सो मेनी बडिंग आर्टिस्ट, उनकी रील्स, दे आर जस्ट पुटिंग सिंपल रील्स ऑन देयर इंस्टाग्राम एंड द रील्स आर ब्लोइंग अप, और उससे वो इतने फेमस हो रहे हैं, देन दे आर opening their own YouTube channels and putting their videos there. YouTube is pushing their videos, और घर बैठे बिठाए इतने सारे लोग फेमस हो गए. तो इट्स नॉट दैट कि अगर आपको सिंगर बनना है एंड इफ यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड तो आपको सीखना ज़रूरी है. लाइक मैंने अभी तक नहीं सीखा और मैं गा रही हूँ एंड माई वीडियोज आर डूइंग वेल. तो आई थिंक it's your personal choice. If you want to sing, then you can learn. Okay, so if you are talking about your video particularly, so but basically I feel ki for a video to get out there, presentation should be there, that is must. Okay, no matter, like lot of people have great voice, but if you're putting a video out there, because we can see the trends, like you are talking about reels and all those things, it's more about how you're presenting yourself in a content, any kind of content. So presentation also plays a vital role in nowadays scenario, like you are talking about reels. Because I have seen your profile where you put your songs and out there. So there I also see ki it's more about, if I see a thumbnail, being a singer over there and with a thumbnail, such kind of a thumbnail, so I will automatically click that video. That's my response. Yeah. Then after I'll see what kind of voice that person is having. Yeah. So this I have learned, or I have seen from your profile keys, that you are a singer, but presentation should also be there. That will add up to your kind of content. How much you agree to this? I totally agree to this because like you said कि अगर cover page अच्छा होगा तो definitely you'll see कि what's in that video. तो it just एक तरह से it makes people curious. If you're making a good cover picture, if you're using good setups for your video, if you're using a nice camera quality, then people will definitely they will be intrigued to see कि okay what's coming next, because it won't be like कि हाँ सिर्फ उसकी आवाज़ सुनने के लिए, because लोग आपकी आवाज़ एक बहुत बुरी क्वालिटी में and you're just lying on your couch in baggy clothes और आप ऐसे ही गा दोगे. तो there should be a nice what do you call it, a nice aura, a nice background, a nice lights, nice clothes, just क्योंकि लोग ऐसे भी डाल देते हैं, ऐसे भी बैठे हैं, but yeah, a nice setup adds to your singing. It makes it even better. तो मेरे हिसाब से तो मैं, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं I devote a full day to that thing. मैं पूरा दिन तैयार होती हूँ. मैं सोच लेती हूँ कल मुझे वीडियो बनानी है, कल मुझे और कुछ काम करना ही नहीं है. शायद मुझे वीडियो बनाने में बस 1 घंटा लगेगा, but I try to make it the best. This is what I want to bring in notice कि people see कि these reels and all कि यार वो तो एक दिन में फेमस हो गए. ऐसा नहीं होता. there is a lot of homework. पूरा दिन बीत जाता है उसे 10 मिनट के कंटेंट को बनाने के लिए. That's why I ask you, because I know कि वो जो उसके behind the scene जो पूरा होता है ना कि setup and all, then you have to बहुत stressful होता है वो. Yeah, all those things. So that's why I was like यार this question should be must to be asked in this podcast, because people don't see, people just see those 30 seconds video, but the hard work behind it 30 seconds video 2 to 3 hours, as you told कि you spend your whole day for that video. Yeah, exactly. मतलब वो पता नहीं चलता, आपको सिर्फ आउटपुट देखने को मिला 30 सेकंड की रील. You just sometimes you don't even like it, but you don't know कि उसके पीछे कितना हार्ड वर्क लगा है. तो मैं कम से कम, मैं जब स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी थी तो मुझे 50 60 रीटेक लगते थे. मतलब मैं गा रही हूँ, कभी कोई नोट हिट नहीं हो रहा, या फिर कभी ज़्यादातर मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होती थी अपनी वीडियो से, तो मैं बनाती रहती थी. आई केप्ट ऑन मेकिंग कि कोई तो अच्छी लगेगी. जब तक मुझे खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, आई वोंट पुट इट आउट देयर. तो
उसके पीछे मैंने एक वीडियो डाली भी थी अपने इंस्टा पे जिसमें आई वाज ट्राइंग टू शूट अ वीडियो बट नो वन वाज लेटिंग मी डू इट. कभी मेरे स्पीकर की बैटरी लो हो जाती थी, कभी मेरी मम्मी पीछे से आवाज़ लगा देती थी, कभी मेरा फ़ोन गिर जाता था. तो आई पुट इट देयर कि all these struggles you have to go through to make a nice video that no one will know. This is something which content creators really don't say it loud in podcast, which you have bring it, which is a very nice point ki yaar, I'm very happy you bring it this ki yaar, these things, these small things comes like sometimes background noise, dog is barking at the background, सब्जी वाला जा रहा होता है. will tell you to make the video again. So for the guys, this is kind of a disclaimer I'll put ki we are recording this video at night so that we'll not get the background noise and all. Dogs are still For the barking. same reason. And the dogs are still barking. Yeah. Okay. So coming back to the point over here. Okay. Can you tell me like as opportunities, if I talk about opportunities for the singers, like you told ki people are getting famous in lockdown, just making a home studio and just having some kind of gadgets and just putting the video out there. So what kind of opportunity you see which are coming opportunity and which are already there opportunities in the market for the singers? Opportunities are already there. You just should know the right time to grab it. And COVID ने चाहे जितने भी लोगों को दुखी करा, it has definitely given so many people opportunities to rise up. बिकॉज मैंने देखा कि आर्टिस्ट या लाइक यू आर जस्ट सिटिंग एट होम एंड यू हैव नथिंग टू डू, तो उस टाइम पे दिमाग चलता है कि कुछ करते हैं, वीडियो बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं. उस टाइम पे कितने लोगों ने कुकिंग सीखी, कितने लोगों ने डांस सीखा, पीपल जॉइंड क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, व्हाटएवर. तो मेरा भी उसी टाइम पर हुआ था जब कोविड आया. देन आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि मैं कितनी खाली हूँ एंड आई हैव नथिंग टू डू. तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि कुछ करते हैं. तो तब मैंने खुद उस टाइम पे अपनी वीडियोस को बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन करा था एंड मैंने कवर सॉन्ग्स निकालने स्टार्ट करे थे. मैंने अपना यूट्यूब चैनल कोविड में बनाया था, जो कि मैंने कभी नहीं बनाया. मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया. उस टाइम पे आइडियाज़ वर कमिंग इनटू पीपल्स माइंड्स कि कुछ यूनिक करते हैं. तो उस टाइम पे काफ़ी आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू मी दे हैव एंड दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब एंड काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं because of that, because it's just because like platform like Spotify and YouTube, it's like doing great for content creators nowadays. Yeah. Okay, so talking about this, I want to know ki you were the main you can say the main key point of this podcast is not following the training process of singing and going with your own flow, with your own kind of a style or with your own kind of a, as you said ki I just like ki yaar main sahi note to hit kar rahi hu, so why I should learn it, but mera like I am not continuous in that, or I am not, you can say, regular in my training classes. So rather than leave it and just do it your own thing. So if I talk about this, so what's your call? Like as you already told ki yaar you should follow the training process, but if there is a artist who are like yaar mere ko, because there are a lot of content creators जो कि they do their stuff and they get popular because of their stuff. Like if I talk about this guy who just make these small reels, जैसे रसोड़े में क्या था, and then साडा कुत्ता and that guy Yashraj. So he brings something new which is not there out there in the market already. Yeah. So if he thought the same way, because he is also a kind of a person who create music, but he have not got famous because of that thing. He got famous because of something different which is not out there already in the market. So it's not about important that you already follow the same kind of the same kind of road which people already followed. You can bring it something new which you own. Ki yaar, this is my thing and this is I own. So what do you think about this? या एग्जैक्टली, क्योंकि यशराज का तो एक बहुत ही एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है इस चीज़ में कि उसने म्यूज़िक वो इतने सालों से करता आ रहा था, किसी ने उसकी वीडियोस नहीं देखी, बट एक बार उसने कुछ इधर से उठाया, कुछ इधर से उठाया, मिक्सअप करा एंड हिज रील ब्लू अप. तो एग्जैक्टली बहुत नए नए आइडियाज़ लोगों के दिमाग में आते हैं. आई हैव सीन सो मेनी बीट बॉक्सर्स गेटिंग फेमस एंड लोग यूटेंसिल्स के साथ दे आर ट्राइंग टू मेक म्यूज़िक.
and they're using different concepts to make music and to record their songs. I mean, they are collaborating with new artists. So exactly, new ideas have come up, and that's the main reason कि people are getting famous. क्योंकि if you're bringing something new to the market, क्योंकि एक कैमरा ऑन करके गाना कोई भी गा सकता है. But if you're doing something new, if you're doing something quirky, then people will like it because it was not there in the market earlier. So obviously it will. See, again, your that point bringing me curiosity. Kia, you said na ki you started in lockdown and you faced lot of challenges. You draft your recording again and again. This is not, यहाँ पर सही note नहीं गया, यहाँ पर सही note नहीं गया. So I want to know more about this because there are people who think कि यार like कि एक वीडियो नहीं हुई तो let's leave it यार. I cannot do. मैं हूँ ही नहीं इस फोटे का, मुझसे होगा ही नहीं है. So I want to know those challenges again. Like deep into कि यार कौन कौन सी तुम्हें ऐसी problems और ऐसी issues आए when you started from the zero. I want to know that journey basically. So can you explain a bit more about that? Yeah, exactly. So when I started making videos, सबसे पहले तो घर से ही बहुत सारी challenges थे. Like घर से ही start करें तो the background noise and the very weird phone camera quality can say, और मम्मी का पीछे से बोलना दैट विल नेवर स्टॉप. तो छोटे छोटे चैलेंजेस एंड ये वाली चीज़ मेरे साथ भी हुई है कि मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं 10 वीडियो बना चुकी हूँ बट वो परफेक्ट शॉट आ नहीं रहा है. एंड आई एम लाइक कि छोड़ यार, मुझे बनाना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है. बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क. यू हैव टू कीप इट गोइंग टू रीच अ सर्टेन लेवल. एंड अगर आप इफ़ यू लीव इट हाफ वे देन यू विल नेवर रीच देयर. तो हिम्मत है बेसिकली कि अगर मैं करे जा रही हूँ, मतलब लाइक मैं पूरा दिन लगा रही हूँ, मुझे 4-4 घंटे लग रहे हैं एक वीडियो शूट करने में, तो आई एम पुटिंग दैट डेडिकेशन कि हाँ दिस वीडियो हैज़ टू बी देयर टुमारो और मुझे इसको बनाना है कैसे भी करके. अब चाहे मैं 10 लोगों को इन्वॉल्व करूँ इसके अंदर, बट आई हैव टू मेक इट. तो धीरे धीरे ये हुआ. उसके बाद फ़ोन भी अगर आपने अच्छा ले लिया, देन मैंने सोचा कि अब मैं माइक सेटअप लेती हूँ क्योंकि मैं रॉ वीडियोस बहुत बना चुकी हूँ. सो अब मैं स्टूडियो सेटअप करती हूँ. अगर मैं माइक ले रही हूँ तो आई डोंट नो कि मुझे कौन सा माइक लेना है, मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है टू एडिट माई वीडियोज़. एंड टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर, आई न्यू नथिंग अबाउट इट. तो मुझे पता नहीं था कि सॉफ्टवेयर, बिकॉज आई एम नॉट अ टेक हेड, तो मुझे पता नहीं था सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ होगा, क्या करना है, वीडियो शूट कैसे करी जाती है, वीडियो शूट इस एंगल से होती है या इस एंगल से होती है, या फिर कैमरा. अब मेरे पास कैमरा तो है नहीं, तो मैं फ़ोन की वीडियो यूट्यूब पे डालूंगी तो उस पर तो व्यूज़ भी नहीं आएंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी. उसके बाद अच्छा स्टूडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट स्टूडियो वाला तो चार्ज करेगा एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो अब वो मुझसे 2 घंटे के लिए ही इज़ चार्जिंग मी 4,000-5,000. तो मेरे घर वाले वो भी अलाउ नहीं करेंगे मुझे. अगर मेरे पास कोई कोलैबोरेशन आ रहा है और कोई मुझे बोल रहा है कि आप मुंबई आ जाओ रिकॉर्ड करने के लिए, तो इवन दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो एक जर्नी में यू सी कितने सारे हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू लव. बट इफ़ यू आर नॉट स्टॉपिंग देयर and if you are still dedicated, if you are still into it, then that is what matters in the end. ये सारे challenges मैंने face करे हैं और ये मैं बहुत precisely बता सकती हूँ कि मेरे साथ कितने incidents हुए हैं जब मुझे अपनी videos को छोड़ना पड़ा. I had to take my videos down. But मैं अगर वो बताने लगी तो वो पूरी रात निकल जाएगी. But yeah, briefly, it's just that don't let these little things, these hurdles, और especially लोगों के comments stop you from doing things. मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मतलब touch wood, I haven't received any bad comment अभी तक की about my singing or anything. But yeah, there are people who say a lot of things about you, like कि क्या ही रखा है इस चीज़ में, क्या ही कर लेगी सिंगिंग करके, और इसमें कोई करियर थोड़ी होता है, एंड पढ़ाई कर लो बेटा, इसमें कुछ भी नहीं रखा, इतने पैसे वेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर. बहुत बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं. बट उन कमेंट्स की वजह से मैंने कभी गाना बंद नहीं करा, बिकॉज वो ही बाद में फिर ये भी बोलते हैं कि हाँ शी हैज़ डन अ रियली नाइस जॉब. तो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर देम टू फिक्स देयर माइंड एंड नॉट. Yeah. I can see, like, when you are saying this now, so it's coming in your face ki how much you went through while doing this whole stuff. So that's very kind of
Again, I can relate with that. Okay, moving on. Uh, okay, so there are a few kind of mistakes people used to do while creating the content. Even when I used to record my videos, so I was like, yeah, abhi now I have, after recording so much videos, I'm like, yeah, I'm doing a bit better than previous one. Though it can be technicalities, or though it can be presentation, though it can be recording a content, something like this. So I want to know, as an independent artist, if you want to highlight such kind of mistakes ki yaar, if suppose someone who is starting from the point where I have started, तो वो मिस्टेक जो मैं कर चुकी हूँ, वो लोग वो मिस्टेक ना करे, तो कैन यू हाईलाइट दोज मिस्टेक कि पीपल कैन स्किप दोज मिस्टेक्स, लाइक इफ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग. या सबसे पहले तो डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट. अगर आप अपनी फर्स्ट वीडियो बना रहे हो और आप उसमें यू आर डूइंग एवरीथिंग यू कैन टू मेक इट परफेक्ट, एंड उसमें यू आर जस्ट सेलिंग योर वॉइस, यू वांट पीपल टू लिसन यू एंड यू वांट पीपल टू जस्ट सी यू देयर. तो अगर उसको यू कीप ऑन, उसको ही अगर आप उसमें एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हो कि मैं इसको परफेक्ट करती हूँ, और अगर मेरे पास माइक नहीं है तो मैं गा ही नहीं सकती, या फिर अगर मेरे पास एक अच्छा कैमरा नहीं है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती, जस्ट यूज़ योर फोन. एंड आपके फ़ोन का कैमरा इज़ इट इज़ इनफ टू रिकॉर्ड योर वॉइस. तो आप वो करो. ये वाली चीज़ मेरे साथ क्योंकि हुई थी स्टार्टिंग में, मैं ऐसे हो गई थी कि अब मैं गा ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं रॉ वीडियोज़ बहुत डाल चुकी हूँ, तो अब आई नीड अ माइक, अदरवाइज पीपल वोंट लिसन टू मी. But there are so many artists who are still recording raw videos and उनके पास माइक नहीं होता, या होता भी है तो they prefer singing very raw. तो just don't try to make your videos perfect. Just make a video and just sing in it and just put it out there. You never know कि लोगों को कब क्या चीज़ कहाँ पर पसंद आ जाए और कब आपका काम बन जाए. तो that is one advice I would like to. Cool. Again, one more thing. While you, as you mentioned, lot of things, yeah, there are a lot of people who keep on giving hell of comments which are negative, but you always seen those kind of motivation which your friends say, yeah, this is something you sing really nice, or this is something you are doing good stuff out there. So don't you think for this kind of thing you should be connected with some kind of artistic people also all around, just to get motivated? Because self motivation is there, but when you see other people also doing something great stuff out there, your artistic friend, it brings something कि यार वो कर रहा है तो यार मैं भी कर सकती हूँ, you know. So you should be all around like being connected with such kind of people. Don't you think that? Yeah, when I started, I didn't have any artistic friends. तो it was just my few friends who kept on motivating me कि तुम वीडियो नहीं बना रहे हो तो we'll make a video for you. कि अगर यू आर एट होम और तुम खुद अपना सेटअप नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे सारे फ्रेंड्स ही मेरी वीडियोस बनाते थे. तो दे वर द वंस हु एनकरेज्ड मी. माय पेरेंट्स वर द वन एनकरेजिंग मी. अगर मैं कभी वीडियोस डाल नहीं रही हूँ एंड मैं बीच में इतना गैप दे रही हूँ, तो वो मुझे बोलते थे कि तुम वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो और ये नहीं कर रही हो. तो इट्स नॉट जस्ट कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो टैलेंटेड होने चाहिए या वो आर्टिस्ट होने चाहिए फॉर यू टू बी एन आर्टिस्ट. Your friends are always there who can motivate. If you have the friends, if you have that circle who motivates you, because I have it, I had it and I still have it. मेरे फ्रेंड्स वो मुझे डांटते हैं लिटरली कॉल करके कि तू कुछ डाल क्यों नहीं रही है इंस्टा पे, it's so dry, why are you not putting your singing videos, why are you posting some stupid reels or your pictures, post videos, we want to see you sing, और हमें और कुछ नहीं चाहिए तुमसे. तो when gradually I made artist friends also, and उसके बाद I was like you said कि वो भी तो डाल रहा है and he's consistent and he's getting views on his videos and he's getting recognized there, उसको वहाँ बुलाया, वो शो कर रहा है, तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी करूँगी. तो वो आपको चार्ज करता है. बट so anything can motivate you, you just have to find that drive that can motivate you to do your work. Great, yeah. मतलब I can see, like when you are saying all this, कि I can see the, like from where you started, like you said in a lockdown. So this is a kind of example because there are a lot of creators who started in the lockdown, and they were like, because in lockdown is all about negativity. If I talk more in COVID time, it's more negative stuff rather than being saying positive stuff. But it's up to you if you want to bring out. It's up to, if you see a half
glass full or a half glass empty. It's all up to you. So that's something great. So people who watching this podcast, guys, I can say ki from this podcast or from Runjhun, you can take this thing at least with you after watching this podcast. Ki that no matter what is happening with you, no matter you are starting from zero. She's in college and she's in third year, I guess. Yeah, she's in third year and she's in college, and she has started in lockdown, and like she posted a video, and she saw those responses from her friends, and she was like, yeah, let's do it, let's be consistent, and this is something. Now she's in the podcast and I'm just recording a podcast with her. So like you can do magic. Like it's all up to you. You have to be positive, you have to be like energetic, and you have to think, yeah, ki every day I have to wake up and I have to think, yeah, I have to create something very crazy. If you have this kind of attitude, you can do it. Okay, Runjhun, there's one more thing which I'm very curious asking you that. Uh, so you told that you are in college. So how you manage your daily? If I ask about your daily in a day, how you manage? Like at what time you record your content, or you select some days for your content, or like how you manage your studies and your kind of content creation? See, because of COVID, my colleges have just reopened, and I was at home only for like 2 years straight. Colleges बंद हो गए थे and no one was going to college. So सब घर पे ही थे और सब खाली थे. तो COVID was the best time to do things, you know. तो अभी जैसे कॉलेजेस मेरे ओपन हुए हैं तो मैं कॉलेज जाऊंगी, एंड इट्स नॉट दैट कि अगर आप लाइक लोग बोलते हैं कि पढ़ाई है और ये है वो है, तो वो पूरे दिन में से आप आधा घंटा 1 घंटा निकाल सकते हो इफ़ यू रियली वांट टू डेडिकेट दैट टाइम टू समथिंग प्रोडक्टिव. तो अगर मैं कॉलेज भी जाती हूँ तो मैं सुबह कॉलेज चली गई, शाम को कॉलेज आ गए, और मैं कॉलेज में भी म्यूज़िक सोसाइटी में हूँ. आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ द म्यूज़िक सोसाइटी, इंडियन म्यूज़िक सोसाइटी. तो वहाँ पे भी वो प्रैक्टिस हो जाती है सिंगिंग की काफ़ी अच्छी. एंड देन यू कम होम एंड हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, हैव योर डिनर. उसके बाद यू स्टिल हैव द नाइट में रात को कोई, स्पेशली आजकल के बच्चे कोई सोता नहीं है, तो 1 बजे सो रहे हो, 2 बजे सो रहे हो, 3 बजे सो रहे हो, क्या कर रहे हो? फ़ोन में लगे हुए हो. तो फ़ोन को साइड रख के जस्ट डू समथिंग प्रोडक्टिव, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. और ये चीज़ मेरे मुंह से सुनने में इतनी अजीब लग रही है क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ. मैं इतनी ज़्यादा जब वीडियोज़ नहीं बनाती तो मैं भी कुछ नहीं कर रही होती. आई एम जस्ट वॉचिंग समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स एंड आई एम लेजिंग अराउंड ऑल डे. बट अब जैसे कॉलेजेस खुल गए हैं तो आई थिंक एक प्रॉपर रूटीन बन जाएगा हर चीज़ का. एंड नाउ आई नो दैट आई हैव टू पुट वीडियोज़ एवरी नाउ एंड देन. तो आई विल टेक आउट टाइम फॉर दैट थिंग. तो मैं कॉलेज भी जाऊँगी, मैं पढ़ूँगी भी. इवन माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो अगर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मैं उससे पहले ही 3-4 वीडियोज़ बना लूँगी, सो दैट एग्ज़ाम्स के टाइम पे मैं उस टाइम पर उसको डालती रहूँ. मुझे रोज़ कोई वीडियो नहीं डालनी है. इवन इफ़ आई एम पुटिंग 1 वीडियो एक वीक में भी, सो दैट्स सफिशेंट. इट्स जस्ट दैट कि मैं रेगुलर हूँ, आई एम कंसिस्टेंट. तो टाइम निकाला जाता है अगर आप सच में निकालना चाहते हो तो किसी चीज़ के लिए. Okay, now I'm gonna ask this one thing which is very much related to content creators or any artist or any writer or anyone who's write his own songs and all those things. So have you ever tried writing your own songs, or you will be doing in future, or have you ever thought of this ki yaar I can also write my songs, or you have like nahi, this is not my cup of tea? Like, what do you think? Can you experiment on this or not? I want to be very honest. I want to experiment. अभी तक मेरे I have one original song which is out on YouTube and other platforms. और अभी मेरा एक और ओरिजिनल सॉन्ग है. मैं कल ही उसकी रिकॉर्डिंग के लिए आई वाज इन द स्टूडियो एंड इट विल बी आउट वेरी सून. बट उस दोनों में ही द लिरिक्स दे वर नॉट रिटन बाय मी. मैं सिर्फ आई वर्क एज अ वोकलिस्ट. बट जब मैं वो लिरिक्स को देखती हूँ देन आई एम लाइक कि मैं भी लिख सकती हूँ ये चीज़. एंड आई वॉन्ट टू, मतलब सच में मैं एक गाना ऐसा अपना खुद का करना चाहती हूँ जिसमें लिरिक्स मेरे ही हों. तो कभी भी ऐसे अगर मैं कुछ कहीं होती हूँ और मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन मैंने काफ़ी अच्छी बोली, तो लेट्स जस्ट नोट इट डाउन कि वो आगे काम आ जाएगी, आगे काम आ सकती है वो. बट वो ये कि अभी आई हैव नॉट गैदर्ड इनफ. That's a very great point which even I can take it with me ki yaar, like while
chatting with friends also, sometimes we used to say some good one liners, है ना? So we can open the phone and just note it on the note panel. Like even I can take this with me. हम भी That's a very बोलते हैं, great हमारे thing. फ्रेंड्स कुछ ऐसा बोल देते हैं, कभी कुछ हमारी मम्मी कुछ बहुत भारी हिंदी में कुछ ऐसा बोल देती हैं, पंजाबी में बोल देती हैं, तो अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये तो काफ़ी रिलेटेबल और रिदमिक बन रहा है, तो लेट्स जस्ट राइट इट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कभी तो लिखना चाहूँगी, और मुझे लगता है कि कभी जब मैं बहुत ज़्यादा खाली बैठी होंगी तो मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं करूँगी। Great. While recording with you, I am just kind of like figuring in my mind कि there are lot of stuff which you already know, but even we have you have not yet or even as a content creator we have not yet explored it, or we have not even tried it. If we try it, maybe we can do wonders in that also. So that's Runjhun, do you have any kind of if you want to give a statement, or if you want to give a one message to all the though you are also started from in the lockdown and you are still progressing it, but if you want to give some one statement or one kind of a message to all the budding artists, like what message you want to say to those people? Like you said, I'm still progressing and I'm not at that stage to give advice to anyone. But still, one thing that I would like to say for them to not make the same mistakes that I have done, वो यही कि don't let the bad comments or the bad reviews, restrict you from doing your thing. क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आई हैव सीन डिस्करेज हो जाते हैं कि अगर मैंने कोई वीडियो डाली है एंड इट इज़ नॉट डूइंग वेल ऑन यूट्यूब, इट इज़ नॉट गेटिंग सफिशेंट व्यूज़, तो लेट्स जस्ट स्टॉप इट, लेट्स जस्ट ड्रॉप द आइडियाज़ ऑफ मेकिंग वीडियोज़ एंड लेट्स जस्ट ड्रॉप सिंगिंग। तो बहुत सारे hurdles are going to be there, and that is what will make you a successful person, because struggle is always going to be there in your path. So just don't stop doing your thing, and either you get bad comments or you get dart from your mummy or from your relatives. So any criticism that you get is going to make you a better person. So just don't let them refrain you from doing your thing. This is the last kind of a question which I am going to ask for this podcast. This I asked in each and every podcast to all the artists. This is my favorite question. So nowadays scenario is all about people are going behind numbers. Like how many views you have on your video, bro? How many like it's get viral or not? Arey, only 20 views, only 200 views. So what do you think? As an artist, we should go behind numbers, or we should focus कि यार if I'm satisfied with my video, I'm very much happy with that. So latest trend says कि you should focus on analytics also. So how you see, like if you post a video, so you also see your views, or you are only happy कि यार मैं खुश हूँ अपनी वीडियो से, मुझे बाकियों से मतलब नहीं है. What do you think? नहीं, I do care about views and Insta analytics और YouTube analytics, but वही है कि अब अगर नहीं आ रहे तो क्या कर सकते हैं, अब गाना तो नहीं छोड़ देंगे ना। तो अगर मैं कोई वीडियो डाल रही हूँ एंड इट इज़ डूइंग वेल एंड गुड, एंड इवन इफ इट इज़ नॉट डूइंग वेल, तो मैं ये सोचती हूँ कि कोई नहीं, अगली अच्छा कर लेगी। अगर मैं वीडियोस डालती रहूँगी तो कोई ना कोई तो वीडियो इज़ गोइंग टू ब्लो अप। तो लाइक अभी रिसेंटली जो मेरा सॉन्ग आया उस पर इट वॉज अ न्यू लेबल एंड इट हैड 0 सब्सक्राइबर्स बिकॉज इट वॉज अ न्यू चैनल। वो एक नया चैनल है, तो we were not even expecting 10K views, but the song has over 50K views now in just 2 weeks. तो obviously मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ से impressed हूँ कि मेरा पहला song है and it has done so well. तो I will keep making songs, और अगर उस पर 5,000 तक views भी आते हैं, उस पर 2,000 भी views आते हैं, तो it's not like कि मैं गाना छोड़ देती या मैं और videos नहीं बनाती, because I will keep it doing. And agar if I am consistent, then people are going to witness my work, they are going to recognize it, I am going to get some kind of acknowledgement from people. Instagram पे the analytics that I don't understand. मैं सिर्फ वीडियो डालती हूँ अपने लिए और अपने फॉलोअर्स के लिए, उनको अच्छी लगती है, I get good views, तो
That is it. Okay. So I hope so. We have covered lot of things in this podcast. So this brings to the end of this podcast. I hope so you enjoyed it. I loved it. Thank you so much. It was very nice to be here. Okay. So thank you so much, guys, and people who are watching us from so long. Thank you so much for watching this podcast. And see you in the next podcast with the next artist and with our next hot topic. Bye bye. Take care.